foreign literature, Greco-Roman literature or accounts. So the best example is Indica. Indica. Written by whom? Megasthenes. Written by Megasthenes. Megasthenes. And who was Megasthenes? Megasthenes. Who was Megasthenes? Megasthenes was ambassador to Mauryan, royal palace, sent from Seleucus Nicator. Seleucus, he was the ambassador of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator. And Seleucus Nicator was the governor of Alexander. Take down. Megasthenes was ambassador of Seleucus Nicator to Mauryan court. Mauryan court. At the time of Chandragupta, he came and he stayed in the Mauryan court. So Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator was the governor of Alexander. Alexander made the empire. So one part was given to Seleucus Nicator. Getting the point? In the northwest side of Indian subcontinent. Mauryan court, C-O-U-R-T, royal palace, Mauryan court. This one, governor of Alexander. Alexander. Yes. Yes, yes. So means the territories conquered by Alexander would be given to Seleucus Nicator to rule on his behalf. And then this man sent his ambassador Megasthenes to Mauryan court, Chandragupta Maurya. So he has given some account that is known as Indica. Getting the point? On the basis of this Indica, because this is not a one book, it has been distorted. But the other historians had taken some example from here. And so the other historians, many historians like Strabo, Arrian, so they have taken example from here and they have also given some account. So their accounts are also important to know about Indian past. So account of Strabo, Arrian, Ptolemy, and then Pliny is a Roman writer, Pliny. So all accounts are important. They are the example of foreign literature to study the ancient history. The account of Strabo means what he has written, Arrian, Ptolemy, and Pliny. So it is the part of Greco-Roman literature, the accounts. Then you know that in the third Buddhist council, who was the patron of third Buddhist council? Asoka. Asoka was the patron. He sent his son and daughter, Mahendra and Sanghamitra, to Sri Lanka to spread Buddhism. And so Buddhism spread to Sri Lanka, and there two chronicles came out, Deepavans and Mahavans. Deepavans and Mahavans. Take down. These are the Ceylonese. Ceylon, you know, na? Ceylon. Ceylonese means Sri Lankan. Ceylon. Singhal Dweep. Old name. So, Deepavans and Mahavans. These are the Sri Lankan text. Sri Lankan Buddhist text. They also talk about Mauryan period of India. Deepavans and Mahavans. It's not N, M. Sanskrit, M means N. Like Sankalp. We write Sankalp like this. Samkalp. Not Sankalp. If you write, it's also correct, but actual is Samkalp. No? M. अब क्या है? हाँ, Chinese ना?
So Chinese means Hokyuki and Siyuki. Hokyuki. It's account of फाहियान. फाहियान. इस बार यही क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था. फाहियान केम टू द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड. गुप्ता पीरियड यहीं पे लिखिएगा. होक्यूकी. इट्स अ बुक, इट्स अ टेक्स्ट, इट्स अकाउंट ऑफ फाहियान. फाहियान केम टू इंडिया इन गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड. And when he came to India, there was a reign of Chandragupta second, Vikramaditya. Chandragupta Vikramaditya. Chandragupta Vikramaditya. This was the question this year. Very simple question. Like even SSC would not be asking this type of question. But even many people have made mistake because they do not read NCERT books. So facts should be taken from NCERT only, not from outside. Getting the point? So Fahiyan at the time of Chandragupta Vikramaditya, but Fahiyan had not mentioned the name of Chandragupta. He never met him, he never went to his court, and he even never uttered the name of Chandragupta second in his account. तो आगे यूपीएससी पूछेगी तो ये पूछ सकती है स्टेटमेंट देके. ठीक है. So this is about Hokyuki. Yes. Fahiyan was a Chinese traveler, Chinese pilgrim. He was a Buddhist traveler to India to know about Buddhism. So Fahiyan, they are Chinese pilgrims. Pilgrims means to know about Buddhism. And the second was Wensang. Wensang. His account is known as Siyuki. Wensang account known as Siyuki. S-I-C-U. Wen. H-U-E-N-T-S-A-N-G. Wensang. Jang Sang भी sometimes they can ask. एक चीज ध्यान रखना है, proper noun would be always differently spelled. इसलिए बुक्स में अलग अलग नाम मिलेगा, सचेत रहना. ये नहीं कि छोड़ के चले आएंगे. Siyuki. S-I-Y-U-K-I. Siyuki. Proper noun is pronounced differently by different people. तो इसलिए स्पेलिंग बदल के आ सकता है. इट डजंट मीन दैट आपको अगर इस तरह का स्पेलिंग नहीं मिला वेनसांग का छोड़ के आ जाए क्वेश्चन. बहुत बार होता है ऐसा. यूपीएससी ऑलरेडी हैज डन दिस ना. एक बार क्वेश्चन आया था, समझ लेना है यूपीएससी में कि सती सिस्टम हैज बीन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम in which inscription? So it's a Aaron inscription, second is Mandsaur inscription, third is Gwalior inscription, and the fourth is you can say Junagadh inscription. Very famous question है सती system. First archaeological evidence of Sati system in India. First archaeological evidence of Sati system in India is found from Aaron inscription. But हिंदी में आप देखते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश में आता है. हिंदी में गलती से ईरान लिख दिया था. क्या लिख दिया था? इंग्लिश में आप देखिएगा, चेक करिएगा. इंग्लिश में है एरन, हिंदी में. तो इसलिए यूपीएससी लिख के देती है कि अगर हिंदी के स्टूडेंट भी हैं तो चेक करें इंग्लिश वर्ड को, क्योंकि उसी को माना जाएगा. तो बहुत लोगों को लगा कि ईरान तो दूसरे देश चला गया. उनको पता था कि ईरान आंसर है, बट ईरान बाहर चला गया तो उन्होंने ग्वालियर मार दिया. गलत हो गया. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. समझ गए ना? ये हमेशा प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा. सो इसलिए प्रॉपर नाउन में नाम अलग अलग होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब वॉलिस्टी पढ़ेंगे तो मैजिनी का होता है ना स्पेलिंग्स, लेकिन ऐसे भी आ सकता है मैथ्सिनी. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नहीं आया तो ये आ गया तो आप छोड़ के आएंगे. मिलता जुलता होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन. उसी के मतलब बाहर की बात तो अलग करें, भारत में भी आपको ऐसा मिलेगा. साउथ इंडियन नेम जब आप लिखेंगे तो अलग होगा या नहीं. फॉर एग्जाम्पल मनी मेखलई, नाम सुना होगा. मनी मेखलई.
या शिल्पादिकारम, सुने हैं ना, शिल्पादिकारम। अब इसको मणि मेघलाई भी आ सकता है, मणि मेघलाई, और शिल्पा दिगारम। थोड़ा मैच करे तो समझिए कि मतलब मोटा मोटी वही है। प्रोनाउंसिएशन के कारण चेंज होगा, नॉर्थ इंडियन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो इवन नॉर्थ इंडियन जो बुक्स राइटर हैं वो भी जो वर्ड लिखेंगे वहां से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं मलयालम टर्म जानते हैं सही से, तमिल जानते हैं, तो इसलिए प्रॉपर नाउन में स्पेलिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ध्यान रखना है जब भी आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका चाइनीज अकाउंट, व्हाट इज दैट, वेनसांग और फाहियान सियूक की। अब क्या बचा, तिबेतियन, द अकाउंट ऑफ लामा तारानाथ, लामा तारानाथ। There is also mention about ancient India, Lama Taranath account. A Buddhist monk of Tibet. Account of Lama Taranath. And then Al-Biruni. Al-Biruni. He was a co-traveler, है ना, who came to India with Muhammad Ghaznavi, है ना, and he has left account of India.